Good morning, dear students. Today I am going to start exercise 13C. Exercise 13C. Because 13B I had sent yesterday. Now question number 1. Classify as constants or variables. So constants are 4, 3/7, -8 and 0. These are constants. Okay. And variables are -8y, 9x, ab, bx upon y, 3x square upon 2z. These are variables. Okay. Now question number 2. Write all the terms of the following algebraic expressions. 3x plus 5y minus 6z. There are 3 terms. First term is 3x. Second term is 5y. And third term is minus 6z. So we will write first term 3x. Second term 5y plus 5y is there, so 5y, and third term is minus 6z. Okay. In the same way, you can write in second part also 6a square plus 5b square minus 3cd. There are 3 terms in this also. First is 6a square, second term 5b square, and third is minus 3cd. These are 3 terms. Okay. So in this way you can do question number 2 all parts. Now question number 3. Write down the algebraic expressions whose terms are 4a square. Terms are given 4a square minus 2b square minus 3. So you can write 4a square minus 2b square minus 3. This is similarly second part 7x minus 5 plus 8x square. This is second part. Okay. Now question number 4. Question number 4. Identify monomials, binomials and trinomials. Monomials means in which only one term is there. Binomials means in which 2 terms are there. And trinomials means in which 3 terms. So first part you see 2m plus 3n. You see first term is this, second term is this. 2 terms are there. So it is binomial. It is bi means 2. Binomial. Okay. Bi means 2. 2 terms are there. First term is 2m, second term is 3n. So 2 terms. So this is binomial. Now second part a minus 5b plus 7c. Here 3 terms are there. First term is this, second term is this, and third term is this. So this is trinomial. Nomial. Okay. Third part 2/7 a square. In this only one part is there.
So this is monomial. Mono means 1. Fourth part, 5m square minus 4. Two terms are there. One is 5m square and there is 4. So this is binomial. Similarly, fifth part, 7a square plus 2b square minus 4ab. So here you see, first term is 7a square, second term is 2b square, and third term is minus 4ab. So three terms are there. This is trinomial. Okay. So in this way, you can complete. Now question number 5. Write the coefficient of A in the following. Coefficient of A. So first part, coefficient of A in 3A. You see, coefficient of A means you have to leave this A. After leaving this A, 3 is left. So this 3 will be coefficient. This 3 will be coefficient. Okay. Second part, coefficient of A in PA. You see, PA, you have to find out coefficient of A, so leave A, you will get P. So P is coefficient of A here. P is coefficient, so you will write P. Similarly, third part, coefficient of A will be minus 3P. Leave A, then you will get minus 3P only. So in fourth part, coefficient of A is minus 3P. In third part. Now in fourth part, coefficient of A is 4y square. Because leave A, you will get only 4y square. So fifth part, coefficient of A is minus 1 by 5P. Okay. So this is question number 5. Now question number 6. Write the coefficient of x in 7. Coefficient of x in minus 7xy square. You see, in the same way as you have done question number 5, similarly you leave x because you have to find out coefficient of x, so leave x. After x, how much is left? Minus 7y square. So this is coefficient. Minus 7y square is the coefficient. Similarly, second part, it was first part. Second part, coefficient of m in mx square. So you see, coefficient of m को लीव करो तो x स्क्वायर बचेगा, तो कोफिशिएंट हो गया x स्क्वायर. क्लियर. सिमिलरली थर्ड पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y in minus 5 by 9 x square
y ax square y. So that is leave x square y, x square y you leave, it will be minus 5 by 9 a. So this is coefficient. Now fourth part, a in minus a, coefficient of a in minus a is equal to minus 1, because minus 1 is hidden. Okay. Now question number 7. Write down the numerical as well as the literal coefficient of the following. First part, minus 12 x square y. You see this minus 12 is numerical coefficient. So numerical coefficient is minus 12, and literal coefficient is minus x square y. Literal coefficient is x square y. Understood? So literal coefficient is x square y and numerical coefficient is minus 12. Similarly, second part also, numerical coefficient will be 8 upon 15, and literal coefficient will be a square bc. Okay, numerical means number or fraction, like that. फ्रैक्शन या नंबर को छोड़ करके, फ्रैक्शन या नंबर ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और इसके अलावा जो भी बचता है वो लिटरल कोफिशिएंट है. सिमिलरली थर्ड पार्ट, माइनस 7 बाई 9 ए बी सी. तो माइनस 7 बाई 9 ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और ए बी सी लिटरल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है माइनस 7 बाई 9 और लिटरल कोफिशिएंट ए बी सी. क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट माइनस 2pq. तो इसमें माइनस 2 ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और pq ये लिटरल कोफिशिएंट है. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -2 और लिटरल कोफिशिएंट pq. ओके. सिमिलरली फिफ्थ पार्ट -3xy अपॉन 7z. तो -3/7 ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, -3/7 ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और xy/z क्या है? लिटरल कोफिशिएंट. क्लियर? ऐसे कर लो. सिक्स्थ पार्ट -6x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -6 है. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -6 और लिटरल कोफिशिएंट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. ओके. सो इन दिस वे यू कैन डू. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग. फर्स्ट में लाइक टर्म्स मतलब एक तरह का जो टर्म हो, x स्क्वायर y स्क्वायर 2x स्क्वायर z स्क्वायर. इसमें देखो x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये लाइक है, y स्क्वायर और z स्क्वायर ये अनलाइक.
तो लाइक टर्म्स लिखेंगे, लाइक टर्म्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर. क्लियर? Second part, 3xy, 3xy, yz, 5x, 2y7, yz. अब देखो यहाँ एक्स वाई और यहाँ केवल एक्स ही है, तो ये लाइक नहीं है. वाई जेड यहाँ है और 2/7 वाई जेड, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. लाइक टर्म्स और वाई जेड एंड 2/7 वाई जेड, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. थर्ड पार्ट में CAB स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर AC, B स्क्वायर AC और ACB स्क्वायर, ACB स्क्वायर, सबका मतलब एक ही है. ACB स्क्वायर, B स्क्वायर, B स्क्वायर, B स्क्वायर, CS AC AC. सो ये लाइक टर्म्स हैं. ठीक है. Question number 9. Rearrange the factors so that the literal factors are arranged alphabetically and follow the numerical factors. First part में P3, Q2, R4 and S. तो पहले न्यूमेरिकल्स का मल्टीप्लाई कर लो. 3 इंटू 2 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 4. देन P Q R S, P Q R S इज लेफ्ट. तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 P Q R S, ये हो गया. Then second part DE F 15C. तो न्यूमेरिकल 15 है, पहले लिखो. सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखा जाता है, फिर CDEF, CDEF ऐसे सेकेंड पार्ट. ऐसे थर्ड पार्ट X4 YZ2. तो पहले 4 और 2 का मल्टीप्लाई करो. XYZ, 4 2 जा 8 XYZ.